I can do very great in my biology section. But will I be able to get selected if my physics section is weak? Hello people, this is Sakshi and welcome again to the channel PNS Teachers. For those who are new here, I am a first year BSc Nursing student at DMC Bhopal. In this video, we're going to be discussing about this serious problem, that is there any chances for our selection if our physics section is weak? This is the question that comes in our mind whenever we start or whenever we think of starting any preparation. That is there any chance for the selection in the following examination? Maybe it is PNST, PVFT, DHET, PAT and etc. I will try that till the last of this video your problem will be tackled. So, without any further delay, let's get started. Take benefit of the examination. एग्जाम पैटर्न, एग्जाम मार्क्स रिवीजन एंड सब्जेक्ट्स का आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लेना चाहिए. द एग्जाम इज डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट सेक्शंस व्हिच आर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी व्हिच इज डिवाइडेड अगेन इनटू 2 डिफरेंट सेक्शंस व्हिच इज बॉटनी एंड जूलॉजी एंड द लास्ट एंड द फिफ्थ सब्जेक्ट व्हिच इज इंग्लिश. एंड वी हैव ओनली प्रॉब्लम इन द फिजिक्स सेक्शन. एग्जाम में 5 सब्जेक्ट्स हैं और प्रॉब्लम हमें सिर्फ एक फिजिक्स से है. So, हमारे पास बाकी के 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं which carries 30 marks each. So, in the next slides, we will be discussing about the 2 situations. So, the timings are given in the description box, so you can skip the section जिससे आप belong नहीं करते हैं. Or maybe you can watch both these sections too. Firstly, for those who are weak in physics, but उनको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है, मीन्स कि दे आर ओके विद सम सब्जेक्ट्स, दे आर ओके विद सम चैप्टर्स, बट उन्हें किसी चैप्टर्स में प्रॉब्लम है. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव टू डू अ लिटिल एक्स्ट्रा हार्ड वर्क, यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड रैंक. So you can complete and finish these chapters mentioned in this video. The link will be in the description box. If you are facing difficulty but आपको वो chapters complete करने में भी problems हो रही हैं, so you can solve at least these 6 or 7 chapters that I am suggesting to you. These chapters are chapter number 1, moving charges and magnetism. So please ये मत बोलिएगा ये chapter difficult है. This chapter is so easy that मुझसे भी हो गया था. So for this chapter you can just read your NCERT and try solving these questions. They are so easy, so you can easily understand and memorize them. If you have completed this 4th chapter of the 12th class physics, so you can easily finish this next chapter which is magnetism and matter. The further chapters are electronic devices, dual nature of matter, atoms, nucleus, the last 2 chapters which is current, electricity and electronic devices. These chapters are the easiest ones and you can easily finish them and memorize them in your brain. So just try to complete them, finish all the previous year question papers that you have, or if you are not having the question paper, download it from the MPP, the government site. And please solve all the questions required. अगर अभी भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करते नहीं बन रहा है, तो look at the solutions and आप उसको समझ के फिर से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. Moving to the next section. I don't wanna do physics section at all. मुझे physics का एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है और मुझे ये physics section अटेंड नहीं करना है. So is there any chance? So yes, we have a good news for you too. Yes, you can get selected without this too, buddy. So let's discuss about the strategy to score high without physics. So if you are not going to attend any question of physics, you have to make extra effort and have to do extra hard work from those people who are working for it too. अगर आपको फिजिक्स का एक भी क्वेश्चन अटेंड नहीं करना है तो आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. फॉर दिस यू हैव टू मेक श्योर दैट you are scoring more marks in the biology section. Biology section which is divided into 2 different sections which are botany and zoology. Biology section में से botany and zoology जो 16 marks आपके hands में है, आपको उनमें से at least 50 marks score करना है. Because biology section itself carries more than 40% of the whole examination. So you have a great chance to score high even without the physics section. So you have to make sure कि biology में आपका कोई भी question गलत ना हो, and even if the question paper asks 2 or 3 questions outside the NCERT too, you have to score at least 50 marks out of 60 marks. Anyhow आप लोगों को 50 marks तो score करना ही है. So you have 30 to 35% marks in your hands.
बट बाकी के रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट्स में भी आप लोगों को बहुत अच्छा स्कोर करना है फॉर गेटिंग अ गुड रैंक और फॉर गेटिंग द एडमिशन एंड गुड रैंक विद द सिलेक्शन। एंड फॉर दिस यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इंग्लिश सेक्शन 2। इंग्लिश को पीछे मत छोड़िए एंड डोंट इग्नोर इट प्लीज। So I am explaining in Hindi in these videos too, but आप लोग ट्राई कीजिए कि इंग्लिश सेक्शंस को भी स्किप ना करें। फॉर इंग्लिश सेक्शन यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 20 मार्क्स आउट ऑफ 30 और एटलीस्ट 15 मार्क्स इफ यू कैन स्कोर गुड इन द केमिस्ट्री सेक्शन। So if you have achieved 20 marks out of the 30 in the English section, which makes the sum total of 70 marks. So there are very good chances for getting the selection. Listen, you can be selected by doing the things that I have mentioned in the starting, but for getting the ranks and getting your name in the merit list, you have to score good marks in the chemistry section too. केमिस्ट्री और फिजिक्स सब्जेक्ट से ही ये डिसाइड होता है कि हु इज द पर्सन हु इज स्कोरिंग हाई मार्क्स एंड गेटिंग अ गुड रैंक फ्रॉम दोज हु हैव नॉट स्कोर्ड वेल इन द केमिस्ट्री एंड फिजिक्स सेक्शन। सो ट्राई टू स्कोर at least 10 to 15 marks in the chemistry section too. So now if you have scored at least 10 to 15 marks in the chemistry section 2, which makes the sum total of 80 to 85 marks. Imagine, by this you can definitely get the selection, the college of your first preference. Yes, अगर आपके 80 to 85 marks आते हैं so you can get and you can choose your college according to your choices. आपको अपनी पसंद के अकॉर्डिंग ही कॉलेज अलॉट किया जाएगा। Don't forget to hit that subscribe button below. This is Sakshi and I will catch you in the next video. Do like this video and share it with your friends who are going to give this examination too.